Make some noise for VK 18.5. Okay, lights, camera, action, rolling. सब रेडी हैं? I was so excited because हम इतनी बार बैठे हैं और सबके मन में ये आता है ना कि यार sport, you're here because of sport. Everyone plays the sport. Let me ask you, start में, if Virat Kohli did not play a sport at any point in life, where would he be been? I have no idea, honestly. मैंने बोला है 2-3 बार कि probably do some kind of business with my brother or some, because business was something that I saw growing up in the family. My path was different because of sport. So I say business because that's the only other thing I knew or I'd seen. अगर sport नहीं खेली थी ना, मैं sport बोल रहा हूँ sportsman बनने के लिए नहीं. Do you think कोई किसी भी profession में, life के किसी भी उसमें उतना successful हो सकता है बिना sports के lesson सीखे? मुझे ऐसा नहीं लगता है. Maybe लोग हुए successful, but जो values मुझे समझ आई है sport के through, कि वो आपकी लाइफ में कैसी कंट्रीब्यूशन लाता है. कोई भी स्पोर्ट आप खेलो, इट्स नॉट ओनली क्रिकेट. क्रिकेट ऑब्वियसली इज लुक्ड एट फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस, स्पेशली हमारे देश में. बट कोई भी आप स्पोर्ट खेलो तो एक सर्टेन सेंस ऑफ डिसिप्लिन, एक सर्टेन सेंस ऑफ स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा किसी भी स्पोर्ट की. अगर आप टेनिस बॉल क्रिकेट भी खेल रहे हो तो आपको पहले स्टंप्स लानी पड़ेंगी, एक जगह आपको मार्क करनी पड़ेगी कि यार प्लानिंग है कुछ, कि यहाँ पे खेलेंगे, ऐसे खेलेंगे, इस तरीके से खेलेंगे, ये रूल्स होंगे, इस दीवार पे लगेगी तो आउट है, उस पे लगेगी तो छक्का. So what I'm saying is that it opens up a side of you which is making you a more productive person even while playing sport. Physically तो आपका benefit हो ही रहा है, but you also have to think. When you want to win, you have to think, you have to plan. And that brings out more from people than what they imagine. तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पोर्ट की वैल्यू किसी भी प्रोफेशन में आप हो, कोई भी स्पोर्ट खेलने की वैल्यू बहुत ज्यादा इमेंस है. ये अब वो गली क्रिकेट की बात आ गई ना, इस दीवार पे आउट है, उस दीवार पे आउट है. एक बार चलते हैं गलियों में. हाँ, एक बार उन गलियों में चलते हैं. वही वन ऑफ दोस्त, क्या बैट लेके जाता था भाई, स्टंप्स लेके जाते थे या बॉल तो, या पूरी किट थी? तो मैं एक्चुअली आई वाज द जज्बाती किड, राइट, बिकॉज़ आई लव प्लेइंग क्रिकेट. और हमारी जो सोसाइटी में रहते थे वहाँ सबको पता था. सो आई यूज्ड टू प्ले विद माय ब्रदर्स फ्रेंड्स. ही इज 7 years elder to me. क्योंकि मुझे अपनी एज के लड़कों के साथ खेलना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मुझे लगता था यार मेरे को थोड़ा कंपटीशन चाहिए, राइट. आई जस्ट फेल्ट लाइक आई कुड प्ले विद दीज बिग बॉयज. सो दे स्टार्टेड मेकिंग मी पार्ट ऑफ देयर टीम्स एंड आई स्टार्ट प्लेइंग विद देम. तो उनको समझ आ गया कि इसमें तो बहुत ज्यादा कीड़ा है क्रिकेट का. तो स्टंप्स हमारे घर पे होती थी, बैट हमारे घर पे होते थे, बॉल जो कॉस्को की हम खेलते थे उस टाइम पे वो हमारे घर पे होती थी. सब कुछ मैं लेके जाता था. और जब शीशा टूटता था सब घर भागते थे. मैं अकेला था ग्राउंड में, स्टंप्स वापस लेके जानी, आंटियों से भी डांट खानी मैंने, बॉल भी उनसे मांगनी, बैट भी लेके जाने. मैं कभी लड़ाई वड़ाई भी नहीं करता था किसी से. फिजिकल तो चांस ही नहीं. मैंने कहा कोई मुझे मार के निकल जाएगा, मैं तो मर जाऊंगा, मेरा उसको नहीं पता क्या होना. तो आई नेवर यूज्ड टू गेट. You know what the follow-up question will be, right? आप मुंह से कुछ भी बुलवा लो, बट मैं फिजिकल लड़ाई नहीं. सारे देख रहे हैं, सबके ना जितने क्रू वाले, सबके चेहरे पे स्माइल आ गई है. एक अरे सो अगर कभी भी वर्बल मेंशन चल रहा है, किसी ने हाथ उठाया दिया यार रुक जा. यार वो भी मैं ग्राउंड पे करता हूँ, मुझे पता है वहां पे लड़ाई नहीं हो सकती ना, वहां पे अंपायर बीच में आ जाएंगे. First time ever we've gotten to this depth. Nice. What are some of the names that you remember? अब इसमें हो सकता है वो आंटियां जो गाली मारती थी या फिर मोहल्ले के बच्चों के वो निकनेम्स वगैरह. Let me see how many can you remember? I remember quite a few actually with the जो क्रिकेट में हम लोग खेलते थे, मेरे भाई के दोस्त हैं. एक लड़का था, his name was बंटू, एक का बबलू. अभी मैं आपको सोसाइटी की बातें बता रहा हूँ. Then a really good friend of mine, his name was Jay Ganesh. He was the family was from South India and they used to live in our society. वो था एक्चुअली जिसने मेरे फादर को सजेस्ट किया था कि इसको आप एकेडमी में डलवाओ, बिकॉज उसको क्रिकेट का आइडिया था. सो ही सॉ मी प्ले और उसने बोला था मेरे फादर को कि यू शुड मेक हिम प्रैक्टिस प्रोफेशनली. वहां से उनको इनसाइट आया. देन ही आस्क्ड मी, आई सेड यस ऑफ कोर्स आई वांट टू. स्कूल में, क्योंकि अभी हम स्कूल पे आएंगे, क्योंकि ये कल्चर अगर चेंज करना, आई थिंक द फर्स्ट एंड द बिगेस्ट स्टेप आना चाहिए स्कूल में. What were some of your teachers? Were they
विराट खेल, या फिर कुछ ऐसे भी थे कि विराट why are you missing classes? Early days before you were playing a lot of competitive stuff. I was in a school called Vishal Bharti, which was in West Delhi, because that's where I grew up. तो पश्चिम विहार एरिया है वहाँ पे, स्कूल वाज देयर. तो मैं 8th स्टैंडर्ड तक मैं वहाँ पे पढ़ा और क्रिकेट में खेलता रहता था. वहाँ से बहुत छुट्टियाँ भी मुझे लेनी पड़ती थी क्योंकि मैचेस होते थे. सो द टीचर्स वर वेरी कोऑपरेटिव. मुझे कभी भी ऐसा स्कूल में फील नहीं हुआ, एटलीस्ट एट द टाइम दैट आई वाज ग्रोइंग अप, कि यार बहुत ज़्यादा ना एकेडमिकली बहुत कंपेटिटिव है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एटलीस्ट इन माई ओन एक्सपीरियंस. वहाँ से फिर वी मूव टू अ स्कूल कॉल्ड सेवियर कॉन्वेंट, क्योंकि हमारी वो भी वेस्ट दिल्ली में ही था, सिमिलर एरिया, बिकॉज हमारी क्रिकेट एकेडमी उस स्कूल में चलती थी. तो द स्कूल प्रपोज टू आवर कोच कि व्हाई डोंट यू गेट दीज kids into our school, we'll make a school team, we'll make a strong school team as well. So said it's a great idea, so we all joined and then we made a school team, then we started playing school tournaments as well. Academy की अलग होती थी cricket, school की अलग होती थी, your Salvan boys and your Gyan Bhartis and modern Barakhamba and all these teams were very strong. तो हमें वो tournaments खेलने को मिलते नहीं थे, तो फिर हमने अपनी टीम बनाई, उससे खेलना शुरू किया. तो वहाँ पे एक्चुअली मेरे साथ एक बार एक्चुअली बहुत कमाल का एक इंसिडेंट. हमारी वाइस प्रिंसिपल मैम थी एंड शी यूज्ड टू टीच इंग्लिश एंड शी वाज वाइस प्रिंसिपल एंड सपोजिटली शी वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर. एंड सो उनका मैंने जो क्लास मिस करके मैं बाहर वॉलीबॉल खेल रहा था और सामने क्लास से, बिकॉज द स्कूल वाज, the classes were on the ground floor and she could see and the whole class could see and I was playing with seniors in the school. I was playing volleyball with them and I totally forgot कि हमारा वो फिजिकल का पीरियड खत्म हो गया और ये शुरू हो गया और मैं खेल रहा हूँ and she didn't say anything to me. She came to me, she was like, are you really interested in studying? I said, ma'am, if you ask me very honestly, I'm just doing this to pass my whatever grade I'm in. She said, where's your interest? I said, I love cricket. It's everything for me. She said, then follow that completely. Wow. Which standard is this? What class? I was in 11th. Okay. I had just finished the 10th boards and we had just gone into the 11th standard. And this is when the conversation happened. I was like, it was such a nice thing for me to hear that I wasn't being pressurized, Sport की तरफ preference होनी चाहिए मेरे हिसाब से. तो जिनकी एकेडमिक्स की तरफ प्रेफरेंस है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको स्पोर्ट पसंद ही नहीं होता, तो दे आर डूइंग देयर वर्क, बट देयर आर सम हु फील फोर्स्ड. तो उनके लिए कोई स्पेस ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे दे कैन आल्सो फील लाइक वी आल्सो आर अ पार्ट ऑफ द सेम इंस्टीट्यूशन, बट वी आल्सो हैव आवर ओन स्पेस, आवर ओन प्लेस टू ग्रो, आवर ओन इंटरेस्ट आर बीइंग टेकन केयर ऑफ. बेसिकली इसका सार, इट्स सिंपली पुट, लाइक यू सेड, राइट, मेरा इंटरेस्ट है स्पोर्ट, सो दैट मींस इट्स अ सब्जेक्ट, राइट? यस. So अगर साइंस सब्जेक्ट है, मैथ सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो स्पोर्ट इज अ सब्जेक्ट. So do you think एक चीज, so let there be sport? I mean, just the campaign sounds so good, right? Yeah. For sports aficionados, sport is not एक हफ्ते का एक PE period. No. It's not extracurricular, right? What is it? If you were sitting and addressing maybe the school communities, what would you tell them? I would tell them, don't make them just play sport. Teach them. Because when I was growing up, I had no idea about rules and regulations of majority of the sports around me. Now, when we play cricket, you understand the way the situation of the game is going. So, as a fielder, when you're standing in the field, what distance should you be from the batter to make a difference here? Do you have to be 5 steps back, or do you attack 5 steps more? Because you can sense that he's trying to do this particular thing. The ball might land up here, and you need to be physically fit enough to be in that place to eventually make a difference. Yeah. This is all learning. This is not happening by chance. It's not only fun and games. So what the important thing is to teach them the small details of what it means to play a sport. Playing a sport means you're totally aware in every moment. You're totally present with what's going on. It's not just ha ha he he and kara and you have to be present. You have to do that thing with absolute commitment, with fine details. Usse aapko that same intent can be applied anywhere in life. Because once you're involved in that moment, you will give your best output, whether it's for sport, whether it's for work, anything. It helps you in your attention span and to be able to focus so much. It's so underrated and people don't actually realize this about sport a lot of the times. That's why the people who end up playing sport at a higher level, आप किसी से भी पूछोगे, they are absolutely precisely focused and present in the most
स्ट्रेसफुल मोमेंट्स, वो तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो लाइफ में। तो ये चीज सिखाई नहीं जाती है। स्पोर्ट को देखा जाता है सिर्फ मस्ती मजाक के लिए स्कूलों में, लेकिन आप अगर स्पोर्ट खिला रहे हो, अगर आप बास्केटबॉल खिला रहे हो, आप वॉलीबॉल खिला रहे हो, आप, मैं बोल रहा हूँ कबड्डी, खो खो, कुछ भी खिला रहे हो, कुछ भी, आप समझाओ उनको कि यार एंगल समझना क्या होता है, एक एंटिसिपेशन क्या होती है चीज, यू नो, आप खो खो खेल रहे हो तो वो कहाँ किस तरफ टर्न लेगा, कौन सा बंदा अभी, सो यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंगली। आपकी सेंसेस इतनी ज्यादा डेवलप हो जाती हैं that you start becoming intuitive. I'm not kidding. I mean, through playing sport, I've become so intuitive because once you start perceiving the situation कि यार ये कैसा होगा, where would the situation lead to, and you always have that, you know, little bit of insight कि अपनी gut feel से आपको कई चीजें feel होती हैं कि ऐसा करना चाहिए, and once you follow it and it happens, then you start trusting it in every situation, whether it's with people, whether it's with sport, whether anything, whether you're driving, you always get a कुछ तो होता है कि oh, you know, I need to be careful here. So, अपने आप ही आप थोड़ा, so all these things, my senses started developing way more after I started understanding how sport is played, because मेरा उधर passion था. Passion. It was something that I absolutely loved doing, so I learned it very differently. For me, it was not fun and games. You tell me about leadership, Virat, and I mean, leadership is, that's why I just love doing these interviews, right? You just get to know so much more. Leadership एक अंदर knack होता है, but then you also see someone, you sometimes look up to someone. आपके लिए what was leadership? You know, what you learned from sport, maybe anything? See, leadership, I learned from many people. I learned a lot from MS because I played majority of my career under him, the initial years. But in general, I feel leadership is firstly to be able to take responsibility for yourself. Right? If you can't take responsibility for yourself or for your own space, or for your own well-being, hygiene, whatever it is, you cannot take responsibility for any other person. I had this tendency in me to follow my heart and to go for things naturally. Was the reason why I could urge everyone else around me to go for it and tell them, it's fine. Trust me, it'll be okay. Because I've experienced it. You know, it's not like I'm reading it off a book and saying, come on, we have to play with positive intent. I felt it, I've been there, I've succeeded, I've failed. I've learned from failures, but that has not stopped me from trying again. So it is when you get rid of the insecurities you have as an individual, you'll be able to become firstly your own leader in your own space, and then be able to take responsibility for the others as well, so that if things go wrong, because the one thing that stops us from realizing how good we can be is failure, is insecurity, right? कि खराब हो गया तो, out हो गया तो, pass नहीं हुआ तो, job नहीं मिली तो, you know, CV गया, अब क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, what if it doesn't go through, is the reason why you never really fully commit to it. So at a level where you realize, okay, I have tried this, I have seen ups and downs with it, now I can tell these people, go for it, I'm here, if it goes wrong, I'll take care of it, but don't stop trying. कोई ऐसा instance, because जरूरी नहीं है जो, you know, someone I look up to as a leader might have a way of life जो inspiring लगे, but मेरे तौर तरीके अलग हो सकते हैं. It 100%. could take me time to buy into your theory. 100%. One thing I learned from MS and other people that I've seen lead also, you cannot make everyone happy all the time. This is the absolute truth. And why that happens is because certain individuals will not buy into the intensity of what you're saying immediately. So they try to find their own comfortable ways, which you have to ignore, because the vision is priority. It's not saying कि मैं ऐसे चलाने वाला हूँ. नहीं, मुझे responsibility दी गई है. ये plan है. क्योंकि ये plan मुझे लगता है कि हमें टॉप पे पहुंचाएगी. अब ये हमारा पाथ है. अब किसी को आपने बोलना है भागो, तो किसी को आप बोल सकते हो चल भाई उठ के भाग. किसी को आप समझाओगे या नहीं करेंगे ना तो ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसका कोई फायदा नहीं है. इतना टाइम वेस्ट करेंगे. We are not making the most of our time. You eventually want to enjoy yourself. All these small things matter. Get that guy around in a different way. But the goal is the same. He has to run, he has to run. लेकिन ये नहीं आप बोल सकते कि मैं तो नहीं करूँगा. क्योंकि वहाँ पे पहुँचने के लिए कोई दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 लोग आपसे 10 गुना मेहनत करने को रेडी हैं. क्या कुछ ऐसा भी था, some things that you maybe realized पीछे देखते हुए कि यार I could have done this better. Maybe as a leader I could have done this better. Purely in hindsight. 100%. So I have no shame in accepting that I have made many mistakes when I was a captain. But the one thing I know for sure that I never did anything
for my own selfish motives. That I can take guarantee of that from day one to the last day. कि मैंने एक भी काम वहाँ पे अपने लिए नहीं किया.